सामने है और इससे ज़्यादा रेजोनेंस और इससे ज़्यादा सशक्तिकरण का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मुझे अगर थोड़ा सा मैं अगर याद करने की कोशिश करूं तो डेजी ने एक बार कहा है कि मैं आगे किसी भी पुरुष लेखक का अनुवाद नहीं करूंगी, सिर्फ महिला का करूंगी। तो ये आज की शाम हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है ध्वनि और गूंज से रेजोनेंस तक, उसके इर्द गिर्द रखें। और इससे बेहतर क्या होगा कि बुकर प्राइज विनर और जेसीबी प्राइज विनर दोनों और अगली विनर की तैयारी में पूनम, तो इन तीनों से हम गुफ्तगू करें कि देखिए, प्रश्न कुछ इस तरह से शुरू करता हूं कि आप लोग अनुवाद ने आपको चुना या आपने अनुवाद को? मैं पहले डेजी से समझना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं शायद अंग्रेजी में बोलूंगी, ठीक है? प्लीज बी कंफर्टेबल। I think it shows me. I never occurred to me to translate, but the first time I tried it, I like to say it was sort of like, you know, when a superhero finds their powers, like you know, when Spider-Man feels the little threads coming out of his wrist. I just felt like, oh, this is it, you know, and so I started to do it. बारा, आप अपने बारे में बताएं कि कैसे? Well, for me, I think I kind of went to translation because I used to think that it's a pretty smooth and simple activity, and I'd seen people in my family do it before and do it well. And secondly, also because I felt that I feel even today that there is an urgent need for the treasure of Urdu to be brought before the average reader who wants to read probably in other Urdu in other languages too, and most importantly English. And I thought that I can be a facilitator where I can bring before our Indian readers what all lies, you know, what are the women talking about, what are the themes of poetry, and also then I got to translate some humor for. You know, my sister was doing quite a bit of, you know, the portion in Annual of Urdu Studies, which used to be edited by Muhammad Umar Memon Sahab in Chicago. And so she told me, why don't you also do something? We are short of good translators. And so I translated two of Mushtaq Ahmad Yusufi's humor articles in humor. And I realized that it's quite a challenge to translate humor because Urdu also is very rich in humor. It's a language which lends itself to laughing at your own self. That's another matter that today very few writers of humor are writing in Urdu. And secondly, she asked me to also translate Askari. I did 2 articles by Askari, and all of them were very well received. And so that really gave me a fillip, and kind of I would look forward to any opportunity to translate. Of course, I'm a lazy and laid-back person. That's a different matter. But yeah, I mean, all over a span of 24 years, a career of 24 years, I've ended up translating quite a bit. So that's how it is. And what about you, Poonam? तो मेरे साथ बस ये हुआ that I used to you know, read Hindi novels and short stories. और मेरे जितने भी दोस्त थे वो कोई हिंदी, उनमें से कोई भी हिंदी नहीं पढ़ता था, उनको हिंदी पढ़नी आती भी नहीं थी. Clear? हाँ. So I told my friend one day, I said, you know, there are these beautiful novels and short stories in Hindi, and it's so sad that you are never going to read them because you don't know how to read Devanagari. She said, why don't you translate one, then I can read it. So I thought it was a good idea. But I said, I don't know agar main kar sakti hu ki nahi. And then I started, and I think for me, I don't know if Baran and Daisy agree, it became a bit like a nasha. You know, it gets very addictive. You start translating one, then you immediately want to translate something else, and you immediately want to do something else. So that's how it started for me. जहाँ आपने चीज़ों को ख़त्म किया, मैं वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा पूनम, कि नॉर्मली देखा गया कि धर्म ग्रंथ जो हमारे कंट्री में है, जैसे रामायण, गीता, इनको अगर छोड़ दें हम, तो हिंदी से किसी अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन कम हुआ है.
वनस्पत की हम फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस हिंदी में ट्रांसलेशन ज़्यादा हुए हैं, एक्सेप्ट जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पर्टिकुलरली गीता और रामायण महाभारत, इनका ट्रांसलेशन काफ़ी अवेलेबल है और स्पिरिचुअल बुक्स का अवेलेबल है. सो आपको क्या लगता है पूनम, क्या कारण हो सकते हैं? आई डोंट रियली नो इसका क्या कारण है. एक तो अनुवाद जो है वो भी पहले इतने नहीं, एंड द वे आउट आल्सो. I think translation itself are becoming more visible, and there are more and more translations happening now because there's an interest from publishers. I think for the longest time there was no interest in publishing it in like trade publications I'm talking about. Everybody thought, oh, translations, nobody wants to buy them, they're very boring. I don't know, there was a kind of mental block. So after, I mean, ever since there's been an interest in translations, I think there's been a lot of work in Bengali, in Malayalam. Hindi में थोड़ा कम हुआ है, but I think now it's getting much better. I don't really know why. I don't think I have an answer. उदाहरण और ओरिजिनल्स तो दोनों सामने हैं, बट मैं उनसे भी सुनना चाहूंगा. डेजी प्लीज. Daisy, you have an I answer. mean, part of it is it depends on the whims of the translators themselves, because the publishers don't have a plan. They don't choose specific works that they want to have translated. It's just us. We fall in love with a book, and then we make a sample and we make a proposal and we submit it. So it's all, what gets translated and what gets published is all the whims of the translators. The publishers don't take any initiative. That's true. It's the translators who are sort of forging their own It's path. all just our personal tastes. Bara, what do you think? My experience is slightly different. I don't know, you are free to disagree with me, but because I've lived most of my life, I mean, I was born in Allahabad, and although I had a long career in Delhi as well, but my UP, kind of feeling of being in UP and knowing UP is so very intense कि मुझे ये लगता है कि वहाँ पे क्योंकि हिंदी खुद ही वहाँ की भाषा है और 80% लोग हिंदी ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अनुवाद की ज़रूरत उन लोगों को ना महसूस होती हो जिनके साथ मैं काम करती हूँ. जैसे कि मैं ज़्यादातर विमेंस एजुकेशन में काम करती हूँ, अपनी मदर का जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उन लोगों को अंग्रेज़ी से एक्सेस ही नहीं है, तो इसलिए वो हिंदी में ही चाहते हैं कि उनको किताबें मिलें. मेरे ख्याल से इनटू हिंदी जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से उसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है. और जैसे कि हिंदी से उर्दू पहले बहुत हुआ करता था और उर्दू से हिंदी तो खैर अभी भी बहुत हो रहा है, तो ये एक अच्छा वेलकम चेंज है. और रह गई ये बात कि जैसे जब मैंने यूपी बोर्ड चूज़ किया कि मैं आईसीएसई बोर्ड से 10th करके आई मूव टू द यूपी बोर्ड इन हिंदी मीडियम स्कूल, तो वहाँ पे इंग्लिश में भी किताबें अवेलेबल थी, बट मुझे याद है कि क्योंकि मुझे साइंस पढ़ने का उस ज़माने में शौक लगा हुआ था, दैट हमारी टेक्स्ट बुक्स हिंदी में बहुत क्लैरिटी हमें देती थी. So we were about 18 girls who had moved from St. Mary's Convent to this school, which was known for its science. And we all went and bought all the Hindi books, Hindi textbooks, और उन्हीं से हमने पढ़ाई की to get a good division. So I think, अपनी ज़बान को भी तो enrich हम लोग कर नहीं रहे. We are always moving outwards, including me, because I have been offered many times to translate from the English into Urdu, but I have politely declined, and I have had to admit कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, because जो मेरी academic training है वो अंग्रेज़ी में है, और अदरवाइज मेरी बोलने वाली उर्दू बहुत बेहतर है, लेकिन मुश्किल लगता है, थोड़ा चैलेंज है. अभी तक मैंने लिया नहीं है ऐसा कोई काम. डेजी, कृष्णा सोबती की किताब गुजरात पाकिस्तान से और गुजरात हिंदुस्तान का अनुवाद आपने किया था, और मुझे लगता है रेत समाधि कृष्णा जी को समर्पित है, डेडिकेटेड है. तो कृष्णा सोबती, गीतांजलि श्री या उषा प्रेमवद, 3 फेमस नाम है जिनके साथ आपने काम किया. तो कितना अलग है तीनों का प्रोसेस अनुवाद करते समय, तीनों का लगन. और इनफैक्ट अलका जी सामने बैठी हुई हैं, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि भाई हम डिटैच हो जाते हैं लिखने के बाद. तो इन तीनों का इस पूरे प्रोसेस में कैसा रिएक्शन रहा, मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को आप बताएं. Krishna ji had a very idiosyncratic and unique style. It was experimental, and it was very challenging
to translate that book. It was fragmented, little pieces. And I sat with her a lot to discuss the book, but we often didn't discuss the book. We just had a good time because she loved having parties. So she always had these gatherings of people drinking chai and having cocktails, and she'd serve very heavy snacks, cake or pakore, you know, everything very heavy. And all people would just come and go. But somehow, sitting with her, I started to understand her writing better, her worldview, her way of putting language together, and it helped me translate better. But I think what I learned from her was how a translator has to trust themselves, even when you don't see any way that you're going to make it through this kind of fog. Like I have no idea what's going on here. You just trust yourself as though you have, you know, air traffic control bringing you in, and you just keep going. And eventually the clouds will break and you'll understand what's happening. And I think that trained me to translate Ret Samadhi, because that's like the same way, only on a much larger scale. But I also think that Gitanjali and I are both influenced by Krishna Sobati, that my translation style was influenced heavily by her, and Gitanjali's writing style, and she dedicated the book to Krishnaji, and Krishnaji appears in person in the book, and Krishnaji also, I feel, is part of Ma, the character Ma, especially like the way her clothes are, and so some of the things she says are just straight out of Krishnaji's mouth. So it's sort of an interesting situation where the translator and the author of Tomb of Sand are both influenced by the same person. I think you started Pachpan Khambe Lal Diware because it was the easiest things to start I with. took a break from Ret Samadhi. Took a little break and translated Usha Ji, and it was so soothing. Because it's not that she's easy, but it's just very clear, and every word is in the dictionary, and the grammar is all, you know, the way it's supposed to be. And I didn't have to ask anybody any questions, and I just tore through it. So about halfway through my Ret Samadhi experience, I translated Pachpan Khambe. तो हमारे सामने, And I love that book. हमारे सामने वैसे जावेद सर हैं सामने, और जो अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ वो राइटर्स के बारे में है, और ये इस तरह से कि ट्रांसलेटर्स are just like writers, except they are really nice. And it is a statement of Daisy only. And मैं बाकी दोनों से इसके बारे में ओपिनियन जानना चाहूँगा. क्या है? Translators are just like writers, except they are really nice. Someone else said that to me, so I was just quoting them, but I have found that it's somewhat true. So कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ. So I would like to thank Daisy for saying that. Because I've seen that, you know, I'm at pains to explain Nemat Khana to people, and while Khalid Javed Sahab is having a good time, you know. तो मैं क्या करती हूँ कि लाइक उन्होंने मतलब हम लोगों को इतना टेक्स्ट के साथ उसके साथ इतना खाना पीना बैठना सोना पड़ता है कि वो तो अपना लिख के भूल जाते हैं, लेखक जो होते हैं. अब हम उसको सोचते रहते हैं, रात को अचानक लेटे लेटे कोई ख्याल आता है कि अच्छा ये शायद इस तरह से कनेक्टेड है, या यहाँ पे ये इस तरह से कह रहे हैं. कई बार एडिटर को भी जवाब देना पड़ता है हमें. एडिटर हमसे पूछ रहा होता है कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, यहाँ क्यों हो रहा है, आर यू श्योर आप ये चाहती हैं, क्या ये गैप ऐसे ही रखें. भाई हम क्या करें भाई, कुछ तो आप ऑथर की बात को चलेंगे. फिर अब जब हम उनको समझाते हैं तो खैर मान जाते हैं एडिटर्स, लेकिन खास तौर से एक ऐसी जबान ना जो एडिटर पढ़ नहीं सकते हैं, उनको ट्रांसलेशन पे ही रिलाई करना है. तो नेमत खाना के केस में तो क्योंकि काफ़ी रेफरेंसेस थे फूड के, और वो नॉर्थ इंडियन फूड था, तो और उसमें जो रस्में होती हैं जिन मौक़ों पे वो खाना पका. आर यू ओके विथ हिंदी और हिंदी उर्दू, और शुड आई स्पीक ओनली इन इंग्लिश? नहीं, कुछ भी. You're fine? अच्छा, तो मतलब उसमें क्या होता है कि मुझे उनका अल्टीमेटली फिर मुझे रोमन में लिख लिख के भेजना पड़ता है एडिटर को. बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं कहती हूँ चलिए ठीक है, 1-1.5 पेज में आपको रोमन में करके भेज देती हूँ.
तो एक तो ये कि भाई बहुत अफेक्शनेटली हम लोगों को मतलब डील करना पड़ता है सब एडिटर्स के साथ. वी हैव टू बी वेरी पोलाइट टू देम in much as you feel irritated with them sometimes, but and secondly I feel that since we are always, it's incumbent upon us to write an introduction. अब जब हम उसका इंट्रोडक्शन लिखने लगते हैं तो हमें बहुत कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ता है, बात को बताना पड़ता है कि ये राइटर कौन सी वेव में बिलोंग करता है, फिक्शन का क्या मतलब, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है. तो राइटर ने तो ये सब अपने बारे में सोचा भी नहीं होता है शायद, है ना. तो आई थिंक एक तरह से एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख देना भी जो है वो एक यादगार चीज बन जाती है उस शायर या उस अफसाना निगार के लिए. और मतलब ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू अब कितना कर सकते हैं. और उसके बाद लोग बोलेंगे अब ट्रांसलेशन में वो बात नहीं होती है ना जो ओरिजिनल में होती है. जब आपने एज यू सेड वो टेक्स्ट 10 बार 12 बार पढ़ा है एंड यू हैव केप्ट इट सो क्लोज टू यू एंड यू हैव गॉन ओवर ईच लाइन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. और उसके बाद लेकिन वो मजा नहीं आता ना ट्रांसलेशन में. आप कैसे करते हैं? सो इट्स योर ऑलवेज. पूनम, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा जो आज का मेन टॉपिक है ध्वनि और गुंज से रेजोनेंस तक, तो एक बड़ा बदलाव ये व्यक्तिगत मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पहले अनुवादक का नाम जो है वो अंदर किताब के अंदर हुआ करता था, बाहर हेजिटेट करते थे पब्लिशर्स देने में. और आज जो है वो बड़े अच्छे से बोल्ड तरीके से बाहर लिखा जा रहा है. और इसके लिए मुझे लगता है एक तालियां पब्लिशर्स को चाहिए अनुवादकों के लिए. और पैसे भी ज्यादा देने लगे. मेरा प्रश्न उस पे आएगा, क्योंकि अज्ञेय और भीष्म साहिनी अगर हम लें तो इन लोगों ने पर्टिकुलरली अज्ञेय का मैं देखूं तो 50s के बाद उन्होंने अनुवाद शुरू किया और अनुवाद में ज्यादा पैसे मिले उनको, हजारों में मिले और जब लिखते थे तो 100 में मिलता था. तो हाँ, ये फैक्ट है. ये मैं परसों जब मैं आगे पे बात कर रहा हूँ तो मैं शायद आज भी ऐसे होता. अरे तो वो अपनी जबान उर्दू में तो एक पैसा नहीं मिलता है. तो जब वो पेंगुइन में हमारे फादर ने अपनी नॉवेल ट्रांसलेट की द मिरर ऑफ ब्यूटी, तो उनको अच्छा मतलब उनको मिलना और चाहिए था. कोशिश भी हम लोगों ने की, लेकिन जो भी मिला उर्दू से तो कहीं बेहतर था. और आज भी जो थोड़ी बहुत रॉयल्टीज आ रही हैं उनकी, वो पेंगुइन ही दे रहा है. जो कुछ भी पेंगुइन ने छापा है. शायद आगे का सिलेक्शन बेटर होगा प्रकाशक के दृष्टिकोण से. हम आगे बढ़ते हैं. जैसे दिमाग का दही होना या रात गई बात गई, ये जो मुहावरे और मेटाफर हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक डिफिकल्ट चीज होता है अनुवादकों के लिए खासकर. तो मैं अनुवाद में जो एक्चुअल राइटर है उनकी लेखनी की जो आत्मा है किताब के अंदर, उसको कैसे जीवित रखते हैं? मैं आप तीनों से इस पे गंभीरता से उत्तर चाहूंगा. पूनम, आप शुरू करें. तो जैसे आपने मुहावरों वगैरह की बात की, तो इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं सकता है. अदरवाइज अगर हिंदी में आप कहें गधा कहीं का, देन विल यू से डोंकी फ्रॉम समवेयर? दैट डजंट साउंड राइट. सो वो तो हो ही नहीं सकता है. लेकिन यू हैव टू ट्राई एंड गेट एन इक्विवेलेंट English turn of phrase or sentence or selection of words जो उसको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे. जी. सो सॉरी, उसके बाद आपने क्या पूछा था? मैंने कहा था कि चूंकि मेटाफर और ये बहुत ही स्मार्टली रखा जाता है लेखकों के द्वारा, तो उसको और पूरे किताब की आत्मा को रखना आपका उत्तरदायी है. आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई थिंक दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2-3 पार्ट्स. नंबर 1 इज दैट यू हैव टू familiarize with yourself with the text very deeply. तो मतलब आपको जो उपन्यास है या कहानी है या जो भी जिसका भी आप अनुवाद करें, एक तो उसे बार बार पढ़ना है, 3-4 बार, 5-6 बार, to understand what the writer is trying to say. Then जो writer है उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ पढ़ना चाहिए, उसके जीवन के बारे में, उसके संबंधों के बारे में, उसका जो प्राइवेट लाइफ थी, उसकी जो रिलेशनशिप्स थी, उनका जो काम था. बिकॉज इन माई केस ऑल द राइटर्स आई हैव ट्रांसलेटेड, दे आर नो लॉन्गर अलाइव. सो आई कांट गो टू देम एंड से अच्छा आपने यहाँ क्या कहा था एग्जैक्टली. आई कांट मेक आउट. भूल गए हो. अगर होते भी ना तो कहते हो तो मैं भूल गया. वो ये कहते हैं अरे मैं सोचूंगा, बताऊंगा. You have to try and find your way in the darkness like this. What do you take? I've had both of, and I know Baran has too, but I've had both of these experiences, and
I mean, have the experience of when translating someone who's long gone, so you can't ask them, and translating someone who's there to answer. And I always fantasized that the people who were long gone, if they were alive, they would immediately answer my question. They would say, "Oh yes, that's what I meant. This is what this thing is." And so I always just, I wish that I could channel them and bring them before me. And then with Gitanjali was the first time I had really interacted with the author. And I would often ask her things that she didn't know the answer to, because because an author writes with instinct, and they're not thinking about these nitpicky things. Like one thing I worry about a lot is the way that different words are divided up in the languages. So for example, hat can be the hand, but it can also go up to here. So sometimes it's an arm. So there are these ways that words are divided that are slightly different. And so, for example, in Tomb of Sand, there's the episode of the serious son, Gambhir Beta, and he can't, वो हंस नहीं सकता, right? And so I translated that whole thing, draft after draft, as laugh. And suddenly I panicked, like you're saying, in the middle of the night. I was like, what if she meant smile? Because Hansna can be smile too. So I said, Gitanjali, is he unable to smile or unable to laugh? And she's like, don't know he. So, like it's actually. Yeah. बहुत interesting एक बात मैं डेजी के बाद बताऊंगी. आप complete, you please complete पहले. ठीक है, हाँ? क्योंकि मेरे फादर एक काफ़ी प्रोमिनेंट क्रिटिक थे, उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे. शहरयार चचा जो शहरयार साहब, उनके बहुत करीबी दोस्त थे. और उस वक्त हम काफ़ी यंग थे जब वो बुराओ जान वगैरह आई, तो बहुत हम स्टारी आइड हो गए थे. तो जब भी आते थे तो उनकी कुछ शायरी लेके हम बैठ जाते थे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये वो. तो वो कहते थे, भाई ये सब तो तुम फारूकी से पूछो. मना कर कहते भाई तो फारूकी बताएंगे, मुझसे मत पूछा करो. और एक दफ़े मतलब आई रिमेम्बर कि मैं उस वक्त तक काफ़ी नाइव रही होगी, क्योंकि मैंने बाद में उसकी मतलब समझा. एक बार वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, तो हम लोग सब लोग तुगलकाबाद फोर्ट दिखाने ले गए. हम लोग भी गए, तो वहाँ पे हमारी कार को ना बंदरों ने घेर लिया. बंदर बहुत थे वहाँ. तो एक बंदर आकर के, दो बंदर हमारी बॉनेट पे चढ़ के स्क्रीन पे कुछ मार रहे थे वो डंडे से. तो कहते हैं ये जरूर किसी मरे हुए शायर की रूह है जो फारूकी की कार को वो कर रही है. हमने कहा ही इज बीइंग वेरी अनसिंपैथेटिक. अपने दिल में सोचा, बाद में मेरे समझ में आया कि अच्छा क्योंकि अक्सर हमारे फादर जब कहते थे मुशायरों में नहीं जाऊंगा, भाई प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मुझे मत बुलाओ, अक्सर प्रिसाइड करने के लिए बुलाया जाता, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये एक एंटीपैथी रहती है शायरों और क्रिटिक्स. शायरी से ही बात चली है तो मैं यहीं पे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा. जैसे आपने लिखा है, लेट देयर बी सम क्लाउड्स, लेट देयर बी सम वाइन, आफ्टर दिस लेट देयर बी व्हाटएवर पनिशमेंट दैट मे बी. ये फैज साहब का आपने किया. तो फैज साहब को मतलब हम जैसे लोग तो छूना अनुवाद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा. तो कैसा अनुभव रहा कविता और गद्य में? आपको क्या लगता है कैसे, मतलब क्या अंतर होता है जब आप काम करते हैं? आपने दोनों के साथ काम मुश्किल है भाई. कविता करना मुश्किल है. आपने दोनों किया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं. बट आई हैव बीन वेरी लकी बिकॉज़ फैज के केस में ही इज सो पॉपुलर एंड अ लॉट ऑफ हिज पोएट्री हैज रिसीव्ड ट्रांसलेशंस ऑलरेडी, सो द बर्डन इज लेस ऑनरस. Because I know that there are others who have attempted it and they are not sounding as clear as maybe so one gets away with some amount of ambiguity. So in that sense it's only the music and the lilting quality that you have to try and maintain. And because I also understand that in today's world, as I said in Jaipur also, that translators have finally got some license to be able to say that जिगर को मैं दिल ही ट्रांसलेट करूंगी, हार्ट ट्रांसलेट करूंगी, है ना. तो मतलब कि दिल है दाग, जिगर है टुकड़े को हम ये नहीं कहेंगे कि माय लिवर इज इन पीसेस और समथिंग. तो ये हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इक्विवेलेंट्स जैसे कि आप कह रहे थे कैसे ढूंढते हैं हम. तो हमें अपना अब धीरे धीरे एक रिहैबिलिटेशन हो रहा है हमारी जबानों का, हमारे कल्चर का. तो हम अपने कल्चर में जो मीनिंग्स हैं, जो एनालॉजीज हैं अंग्रेजी के साथ, तो उनको हम थोड़ा बोल्डली अब यूज कर लेते हैं. मेरे ख्याल से जो सबसे पहले जो मशहूर ट्रांसलेटर हैं, के से क्या मैं नाम भूल जाती हूँ, जो बहुत बड़े ट्रांसलेटर हैं फैज के, उन्होंने बहुत लिटरल, उन्होंने क्या किया था कि हर पे दो ट्रांसलेशंस किए थे हर चीज के. नो इट्स कोरिया,
कियरनन तो उन्होंने एक लिटरल किया था और एक मेटाफोरिक किया था. सो ही वाज सो केयरफुल कि मतलब भाई कोई पकड़ न ले कि यहाँ गलती हो रही है. बट नाउ आई थिंक यू नो वी हैव द काइंड ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड सो मच कि आप उतना इंट्रोडक्शन में या प्रेफेस में बता दीजिए कि भाई हम अपनी जो शायरी के कन्वेंशंस में जो अल्यूड कर रहा होगा शायर इज प्रोबेबली अल्यूडिंग टू दिस, तो उसको उस तरह हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. बारा, आपका जो अभी उत्तर है ना, वो मुझे एक प्रश्न पूछने के लिए मजबूर कर रहा है और वो प्रश्न होगा डेजी से. पूनम और डेजी दोनों ने उषा प्रेमवद और भीष्म साहिनी पे काम किया है और तमस पे डेजी ने काम किया है. और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि तमस पे ये तीसरा अनुवाद, बड़ा अनुवाद था. तो प्रकाशकों को ऐसा क्या पेंगुइन को लगा होगा कि तमस पे आपसे तीसरी बार काम करने को कहा? Well, they asked me to do Tamas. It's only the book that I've ever been commissioned to translate, and it was also Bisham Sani's daughter who wanted it to be redone. Okay. The first translation was done by the person I refer to as the infamous J. Ratan, who translated vigorously and copiously from Hindi, Urdu, and Punjabi throughout, the 50s and 60s, and just very badly. And I know we're not supposed to say that about other translators, but everyone agrees on this because he left out huge chunks of text. He would make stuff up. But I had this impression of someone feverishly, you said anuvadik nasha hai, he's like feverishly translating book after book after book. And I always make fun of him to Naeem Sab, who says, Daisy, you should be nicer because he was doing all this work when nobody else was. So, all right, so I'm adding that as a footnote. Naeem Sab is always there to correct me. But then Bisham Sani was told himself that Jai Ratan had kind of made a mess of Tamas, and so he did it himself as well. But interestingly, he also had trouble doing it, and I think it's partly because Tamas is written in this very direct, simple language, and his English was kind of the flowery Victorian style that older generations used, and so he sort of pushed it up into this, it was too flowery. It wasn't, it's so raw and strong the way that it's written, and he wasn't able to do that same thing when he was doing it in English. So, and he also did strange things like left bits out and added stuff in. So. But what I loved was being the third translator, and I think this is sort of what Baran was saying. I loved having the other books with me. It's like having a group, they were by my side and I would yell at them and I'd say, that's so stupid what you did, but sometimes they knew something I didn't know or they had an insight I didn't have. So it's like having a conversation because translation is very solitary. And you have to give them the credit because they are writing in their own times. Yes. Our translations will become dated, I say, about 30 years later. But Jay Ratan actually did some books which now the only translations available of those books are by him. And those books really need to be translated again. Like, for example, Mohan Rakesh's Andhere Band Kamre. I'll do it. He started from that Mohan Rakesh. And he's the only one In who's fact, done a translation with big chunks missing. पुनः मैं ऐड कर दूं कि अगर जिस तरह से एक 3 मंथ के वेकेशन पे डेजी आज यहाँ हैं, हिंदी के वेकेशन पे, इंडिया के वेकेशन पे, तो वैसा वेकेशन बहुत सारे लोगों को मिले कि हर बार एक डेजी पैदा हो इस जगह पे. इनको अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र दे, इन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे. और मैं अब पूनम पे ही आ रहा था कि पूनम, आपने बहुत चर्चित किताब पे काम किया था और वो गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती. तो उसमें आपने, या आपके प्रकाशक का निर्णय होगा या आपका निर्णय होगा, शायद आपका ही निर्णय था, चंदर और सुधा, आपने चंदर एंड सुधा टाइटल बदल दिया था. तो ये बहुत रिस्की डिसीजन है अगर हम सेल्स को देखें, सेल्स के हिसाब से देखें या मार्केट के हिसाब से देखें कि गुनाहों का देवता जैसे प्रख्यात विख्यात किताब का नाम बदल देना और फिर उस पर काम करना. तो आपको क्या लगता है कि कैसा फैसला, मतलब कैसे हुआ ये, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए.
ये फैसला किताब का जो अंग्रेजी वर्जन है उसका क्या नाम होगा ये तो बिल्कुल आखिर में लिया था when I had finished translating the novel. Now you know गुनाहों का देवता is such a beautiful title. इतना खूबसूरत है that when you translate it literally, it just sounds terrible. If you say God of sins or Lord of, it just sounds really bad. So me and my editor at Penguin, we actually really broke our heads over this. करीब एक हफ्ते तक she was sending me possible titles, I was sending her possible titles. Then some titles were very nice, लेकिन किताब से उनका कोई संबंध नहीं था. तो बहुत सोचने के बाद we thought the book is really the love story of Chandar and Sudha. Yes. That is the heart of the story, Yes. Very true. So we thought, let's just keep it simple and say Chandar and Sudha, just like you would say Romeo and Juliet, because at the heart it's their doomed love story, which is, what the book is about. But yes, it was very risky, and I really wish, in this case, I really wish we could have just had the Hindi title for the English book also, but obviously we couldn't. So sometimes it's very difficult to get especially a title of a novel, to get the right title is very hard. So I will be missing अगर मैं एक इंसिडेंस की चर्चा यहाँ नहीं करूँ, and it is related with Daisy only, कि जब इनको बुकर प्राइज मिल रहा था तो इन्होंने कोलकाता के एक अनुवादक का नाम लिया था, अरुणवा सिन्हा. So अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यंगस्टर काफी सारे हैं. Daisy, if you can explain a little bit on that, how Arunava is related to that you are choosing Ret Samadhi or. Arunava Singha is probably everyone here knows is an amazing and prolific Bangla translator. I can't even understand. How is he translates so many? Nobody Bangla knows. to English. Yeah, I talked about superheroes before, but he has a superhero power. Yeah. But he also teaches. So, Anyway, yeah. So, Deborah Smith, who won the first International Booker Award in 2016, she was the first time that they divided the award equally between the writer and translator. And Deborah Smith won it in 2016 for The Vegetarian, which was her translation of a Korean novel. And after that, she started her own press, Tilted Axis Press, which was literally intended to tilt the axis of Western publishing towards Asia and towards Africa, and only publishes translations. So she was in India scouting for Indian books to get translated into English, and she read some of Gitanjali's work that had been translated into English, like My, and I think The Roof Beneath Her Feet. And she heard about Ret Samadhi. It had just come out, I think it was 2018, and she knew Arunava because she had published some of his translations, so she asked who should do this work, and he gave her my name, and I happened to be in Delhi at the time, so he said, we have to meet, and so we met in a cafe, and it felt like a little bit like a conspiracy. He's like, there's this book, and you have to get it. And so I went all the way across town to Daryaganj, and I went into Raj Kamal Prakashan, and I asked for the book, and they're not very willing to give away free copies. It's very difficult. So I had to kind of sweet talk Ashok Maheshwari into handing over a copy, and I had to sign a form in triplicate to show that I had received the free copy. That's but lovely. That's kind of how it happened. Yeah. हमारे बीच इस समय खालिद जावेद साहब सामने बैठे हैं, और खालिद जावेद साहब के लिए एक ताली बजाइए, क्योंकि जेसीबी 2022 का जो प्राइज है वो इसी किताब को मिला है, और पैराडाइज ऑफ फूड, और अनुवादक हमारे यहाँ मेहमान में बैठी हैं बारा. तो हम बारा से पहले पूछेंगे कि ये लॉन्ग लिस्टिंग टू इन लिस्टिंग ये कैसी जर्नी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. आई विल कम टू डेजी आल्सो आफ्टर दैट, बिकॉज आप दोनों ने इसको झेला है. The long listing was really delightful. I mean, I didn't expect it at all, because I had just done it, and then it came.
I was a little sad that it was came out into the market after my father was sadly gone, you know, and would have liked him to see the light of day. And he would often say कि भाई करो जल्दी करवाओ, but वो Juggernaut में भी कुछ वो, because Siva Priya, the original editor, had left by that time, and so they took some time to find new editors because obviously the book, as you've seen, that it's full of it has so much resonance in it, as I think Daisy would like to call it, and it's full of metaphors. So it took time, and it was ready. It was about to come, then COVID happened. So in the sense, I had no idea that it would figure in the long list. But once it had figured, I got a little, you know, Kichiki was very excited, and she just said that, you know, we are keeping our fingers crossed. And then I got calls from the JCB guys. Meeta called up. So then we were waiting for bated breath for the shortlist, but I won't think about it. खालिद साहब तो काफी पॉजिटिव थे तो ठीक था, मजा आया. खालिद साहब पॉजिटिव आदमी हैं तो पॉजिटिव बिल्कुल होंगे. डेजी, ये सेम स्टोरी हम आपसे सुनना चाहेंगे from you. It's the same sort of process. You find out a little bit beforehand that you're on the long list and then the short list. But with the Booker, if you find out you're on the short list, that means you get a trip to London. So my whole family, I didn't invite anyone in my family, but it turned out they were all waiting to get on the plane. And so as soon as it was announced, and this includes my sasural too. So like my sasur, sasur, and my nanad, everybody came. And and I literally didn't, I thought I was going to go alone, but that was not going to happen. So sort of like an Indian experience, you know, having the whole family with you. And then, of course, when you're in London, there's a bunch of events, high-profile events, and it's a bit stressful because nobody knows what will happen. And then at the end of the week, there's this dinner, and they make you sit through the whole dinner like a 3-course meal where they pay tribute to the different books, and it becomes increasingly stressful throughout the evening until I was actually sort of praying that someone else would get the prize and put me out of my misery. And I wished that I could just receive a text message when I was hiding under the covers in my bed. That's lovely. In fact, एक बहुत चर्चित किताब आई है, द ग्रेटेस्ट हिंदी स्टोरीज एवर टोल्ड. इसमें 25 कहानियां हैं हिंदी की, बहुत अच्छी, और उसी में उषा प्रेमदा और बिस्मसाइनी दोनों की कहानियां हैं. तो मैं चाहूँगा कि पूनम, आपने चूंकि इस पर बहुत मेहनत का किया है और मैंने देखा है इस किताब को, तो 2 सबसे डिफिकल्ट कहानियों का जिक्र मैं चाहूँगा आपसे कि अनुवाद करने में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हुई होगी उसका जिक्र करें आप. बहुत मुश्किल है क्योंकि 25 कहानियां हैं, उनका सारा अनुवाद, और हर राइटर का अपना अलग चैलेंज होता है. बट आई थिंक 1-2 बहुत मुझे मुश्किल लगी थी. आई फाउंड फणीश्वर नाथ रेणु's मारे गए गुलफाम very difficult. Very famous one also. Because उसमें इतने colloquial terms हैं that उनको समझना और अंग्रेजी में उतारना was, I think I spent, I don't know how long over that story. It's a long story also. मेरे ख्याल से 37 odd पन्ने की है, बहुत लंबी कहानी है. तो उसमें बहुत मुश्किल हुआ था. In fact, I wanted to ask Daisy also. So I included Krishna Sopti's Sikka Badal Gaya in that anthology, and she uses a lot of Punjabi terms and phrases. Yeah. So did you find that a challenge? Because I found that a little not hard, but you know, I really had to sit and also take somebody's help because I was not so familiar with all the Punjabi. यूपी का थोड़ा है तो मैं जान लूंगी, but I'm not so familiar with Punjabi. Well, I had translated 3 books by Ashk, and he uses a lot of Punjabi. So I have not only my techniques but my people that I ask at this point. I know you have to, yeah, you have to have your people. But I wanted to share an anecdote about Krishna ji because I asked her when I met her. I said, "आप क्यों पंजाबी में नहीं लिखते?" And she said, well, मुझे पंजाबी नहीं आती. And I didn't know what to
What do you say, right? But I think what she meant was literary. Yeah, literary Punjabi. But well, I think one of her real kind of genius aspects of her writing is that she, in fact, creates the Dhwani of Punjabi in her work without literally using it often, without using actual Punjabi words. She makes you feel like you're reading Punjabi. No, I think when you read the novel the short story in Hindi, the Punjabi words give it a beautiful flavor. And when you read Mare Gai Gulfam in Hindi, all the Bihari colloquialism make it very lyrical. But it's hard to translate that into English. डीजी आपने जहाँ तक मुझे पता है कि 1000 पेज का झूठा सच यशपाल का पहला उपन्यास जो आपने पढ़ा पेशेंटली और आई थिंक सीखने के उद्देश्य टू लर्न हिंदी इट वाज मोर यूजफुल टू यू एट दैट टाइम सो कमिंग टू दैट वुड लाइक टू नो कि अभी कौन सी किताब पे काम कर रहे हैं आप on which book now you are working? तो आजकल मैं हमारा शहर उस बरस पे काम कर रही हूँ और गीतांजलि का उपन्यास है जो अभी तक इसका अनुवाद नहीं हुआ है. And that's published in 1998. It's set in a city much like Surat, Gujarat, during a year much like 1992. So it's a very political, hard-hitting novel. And I'm also working on an Urdu novel from 1955 that by a Pashtun woman author. And I like to say that it's Middlemarch meets Magic Mountain in the northwest frontier provinces. About an intellectual heroine, yes. So a lot of work going on. बारा आपके बारे में आप अभी किसी किताब पे काम कर रहे हैं? अभी तो खालिद साहब ने बुकिंग कराई हुई है तो वो है. और एक्चुअली मैंने अधूरा छोड़ दिया था एक उर्दू की हमारी कंटेम्प्रेरी मतलब मुझसे तो खैर सीनियर है, एक शायर हैं बिल्किस ज़फ़रुल हसन, उनकी मैंने काफ़ी सारी शायरी ट्रांसलेट कर रखी है लेकिन उसको अभी एडिट करना रह गया है. तो अब थोड़ा सा इनकरेज हुई हूँ तो मैं सोच रही हूँ उसको भी पूरा करूँगी. और साथ में असल में मैं बुक रिव्यूज़ वगैरह और आर्टिकल्स नौकरी भी करती हूँ ना अभी रिज़ाइन किए हुए थोड़ा सा अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कर रहे हैं. पूनम आप बताएं. फिलहाल आई एम ट्रांसलेटिंग द मेमोइर्स ऑफ two very wonderful Hindi writers, Rajendra Yadav and Manu Bhandari, who were also incidentally married to each other. Yeah. मैं पूनम के एक स्टेटमेंट से इस सेशन को विराम देना चाहूँगा. पूनम ने एक जगह कहीं कहा है कि मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज चेंजिंग. इट रिक्वायर्स नॉट जस्ट ट्रांसलेटिंग वर्ड्स बट एन एंटायर कल्चर. मतलब अनुवाद के लिए पूरी संस्कृति से रूबरू होना अनिवार्य है और आप तीनों ऐसा कर पाई और एक रेजोनेंस क्रिएट कर पाई. तो ये ध्वनि अनुगुंज और रेजोनेंस चलता रहे. बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोलकाता आपको हमेशा याद रखे. शुक्रिया. धन्यवाद. एनीथिंग बिफोर वी प्रोसीड, एनीथिंग अगर कोई आप में से कुछ पूछना चाहें. माइक प्लीज, माइक. We have 5 minutes, so we can have interaction system. Daisy, since you're also a painter, have you ever read a Hindi or Urdu novel that you've thought of translating as a graphic novel, bringing together image and word? Well, that sounds pretty hard, but I have, as you know, painted the cover of Tomb of Sand, and so I feel like yes, there is maybe a graphic novel lurking in there because that was really an illustration of a particular moment, and then I took another moment for the reissue of Raid Samadhi to make that cover, so there may be a graphic novel in me. There's just one question. Is it easier for you to translate a poet if you yourself are a poet? For example, कैफी आज़मी साहब का दूसरा बनवास कुछ दिन पहले सईदा हमीद जी ने ट्रांसलेट किया, तो मुझे लगा कि a poet would have done greater justice to this. Anyone can answer this?
I'm not a poet, so I can't answer. I think that the job of a translator is to be any kind of writer. So when we translate poetry, we are poets, and when we translate prose, we are prose writers. Having said that, I think poetry is really मैं tough. It is tough. मैं आपके आंसर ऐड कर देता हूँ कि मेरी किताब आई है सर अभी इसी महीने, और उसमें 11 कृतियों को कविताई की है मैंने. तो ये तो डिपेंड करता है आई थिंक इंडिविजुअल पे. लेकिन कविता बहुत मुश्किल होती है. सर, Two quick questions. One, that do you think ghazal, which is a strange form of writing, it's a strange genre, is it conducive for translation? A couplet can be, but ghazal, the whole ghazal, because it is eclectic, every one share is complete in itself, and what puts them together is the meter, rhyme, and radif. Now, when you translate, all these things go away. So it looks totally scattered. The idea, there is no central idea, unlike a poem. There is no central idea running through the couplet. So is it conducive? Personally, I feel it is not. You can translate a couplet, but not a ghazal. One. Number two, there is a great Urdu writer, and she has written certain novels which are of, say, I mean, if I am not overestimating her, which I am not, are better than whatever Hemingway has written, or many European writers. That is Quratul and Heather. yes. She has written a novel at the age of 30-31, Aag Ka Darya, which starts from Gupta period and ends a novel, and at the partition of India. Yes. It means almost 2,500 years are in a novel, and with characters. So there are many, Garjeshi Range Chaman, again 200-300 years covered in a novel. And there are quite a few books, and then novelettes of her, great novelists, short novels. They, I think, waiting to be translated. And if they are translated in English, the world will know that India is such a great novelist. Can I answer that one? The thing is that Goethe and Heider translated most of her books herself, and she was very adamant that nobody else get permission. And her literary heirs refused to give permission, and I know because I've actually tried to get permission to translate Al-Qadariya, and I have been soundly dismissed. I'll get you the permission. Thank you. Please do, and I'll do it. जावेद सर का जो I'll पहला get you 3 of you permission for one novel each. ठीक है. तो 12 मैं कहूंगा जो पहला प्रश्न था सर का बहुत वाजिब और बहुत ही, तो अगर आप कुछ कर पाए. Daisy is better equipped to answer. ना? Because वो गजल के Okay, ऊपर. I mean, you've actually translated more ghazals than I have. मैं probably. इसलिए उनके पास जा Yeah, रहा था. but I would just say that I have also tried to translate ghazals, and you're absolutely right when you say that meaning can fall apart when you lose those unique signatures to the ghazal, and especially since there's no theme carrying them through. But I also, as someone who likes to translate things that are impossible, I feel like it must be possible, and there must be some way, partly through perhaps contextualizing enough so that readers understand what to look for, what they are supposed to appreciate, because that's even in Urdu, to understand ghazals, you have to have a certain amount of training to know what you're looking for and what you have to appreciate, and where you cheer and where you say wah wah, right? You must be familiar with Dr. David Matthews from SOAS. Yes, yes. He had translated my poetry, including the ghazal, and he insisted that he would like to translate the ghazals also. So ultimately, at best, they start looking like translation of Doha. Yeah, And very true, sir. He translated it with creating rhyme and meter for each and every shade. So they look like separate Doha. They seem to be ghazal. आई वुड से कि मतलब वो काफिया रदीफ तो हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी रिटेन कर ही लेते हैं, और मीटर का उतना ख्याल अगर ना रखें तो एक ये भी तो देखिए कि इतने सारे, अब जैसे मान ले तो ये होता तो क्या होता, मान लीजिए उसका हम कर लेते हैं, या व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड का इस तरह का कुछ बना लेते हैं, या टेल मी,
तो उसमें ये तो कम से कम नजर आता है ना कि इतनी इस आखिर के टैग को शायर ने कितनी तरह से अलग अलग ख्यालात उसमें, मतलब सब डिस्कनेक्टेड हैं जैसे आपने बताया और होते ही हैं, तो उसमें ये भी तो नजर आता है कि इंजेनुअसनेस कितनी है शायरी में, क्योंकि मुश्किल तो है ही, डिमांडिंग है, लेकिन शायरों का कमाल इस बहाने से नजर आ जाता है कि आप लोग जो हैं रदीफ काफिया तो रखना पड़ता है, लेकिन आप कितनी तरह के मजमून ले आते हैं. But no European language has Radif. हाँ जी, Only in our language. तो अच्छा है ना, हम लोग को मुश्किल है, हम लोग अगला सेशन जो है वो मेरे ही पोइट्री का है. तो मुझे माफ यहाँ पे कीजिएगा, आप लोगों को माफ माफी कीजिएगा. के साथ रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे काम ही यही दिया गया है, रोकने का, चलाने नहीं, का. नहीं, बिल्कुल. तो बातचीत का ये कारवां तो चलता रहता है. इतना खूबसूरत बात कभी कभी बनती है. और सुधा जी आ गई हैं, तो सुधा जी को वेलकम करते हुए हम चाहेंगे कि एक तालियां कम से कम इन तीनों के लिए बने और जावेद सर के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.